Good evening to all of you. Today we will learn chapter 1 class 6. It is food. Where does it come from? As the chapter name suggests, where does it come from? Means in this chapter we will learn about the food ingredients and the sources of the food. So as you know, daily we eat food in the home. Okay, so what is food variety? What is the food variety? Variety means types. So there are many types of foods in our meals, like morning breakfast we can eat any healthy food, milk, cornflakes, etc. In the midday meal we can take full balanced diet like chapati, rice, pulses, vegetables, salads. All are the food in the midday meal. At evening, high tea is the 4 p.m. snacks. Okay, so at that time we take some snacks, and at night we take dinner. So this is the variety. As you know, we have many foods, some as per the geographical location, as per the demographical location, people has different variety of foods. So what is varieties of food? वैरायटी ऑफ फूड्स आर टाइप्स ऑफ फूड. देखिए, जो हम खाना खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड्स रहते हैं दिन भर में जो हम खाते हैं उसे हम कहते हैं वैरायटी ऑफ फूड. नाउ वन मोर टर्म हियर रिटन इन योर बुक, इंग्रेडिएंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स मीन्स वो किससे मिलके बना है. अगर हम बात करें राइस की, सो राइस टू इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना होता है. राइस, raw rice and water. So raw rice and water are the ingredients of the food. Ingredients means वो food किससे मिलकर बना हुआ है. So this term is called the ingredients. As ingredients decides the nutritions and the vitamins of the food. So that's why ingredients are very important. Like roti or chapati, we can take the ingredients of roti and chapati are atta and flour and water. Pulses, dal ingredients are pulses, water, salt, oil, ghee, spices, etc. So in this page we have covered the variety of food and ingredients of. In second part, we will cover food material and sources. What does it means by food materials? Food materials means all the things or the edible things. Edible means खाने योग्य. Edible. So all the edible things, varieties of edible things are called the food material, जिन्हें हम खा सकते हैं. Sources. Source means स्रोत, कहाँ से वो origin हुआ है. What is the genesis? What is the origin of the particular thing is called the source. So in this part we will learn about the food material and the sources of the fruit. Okay, so sources of the foods, like if we will talk about the fruit. So fruit, the source of fruits are tree. The source of egg is hen. So animals. So the source of rice are crops. So that are the sources of foods. So source means from where the fruit has come from. Okay, so from where do they come from is called the source. And the food materials varieties are like examples. Milk come from cow, so by it is comes by animal. Okay, so this is the called the food materials and the sources of food. Why is it important to know the sources? Because we can differentiate fruit in foods in different manner. That's why it is important to know about sources. This we have covered the part 2. Let's move to third. In this part we will learn about the plant parts and animal product as a food. So as you know, we eat the some animal parts and plant parts as a food. So plants, by which what part of plant we take, we eat. हम plant का कौन सा पार्ट खाते हैं? डिफरेंट लाइक लीफी वेजिटेबल्स की हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं. कभी हम रूट्स खाते हैं, समटाइम्स हम स्टेम्स खाते हैं. सो अलग अलग, समटाइम्स हम फ्लावर्स खाते हैं. सो डिफरेंट प्लांट्स के हम डिफरेंट प्लांट्स को खाते हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम
2 और मोर देन 2 पार्ट्स भी हम एडिबल खाते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड, सरसों, ठीक है, मस्टर्ड्स के हम सीड्स भी यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल्स बनाने के लिए, मस्टर्ड की लीव्स भी हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल के लिए। सो मस्टर्ड और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिससे हमने फ्रूट्स भी हम खाते हैं, उसके स्टेम्स भी खाते हैं, उसके रूट्स भी खाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। और जिसे खाते हैं खाने योग्य, ईटेबल, ईटेबल को हम कहते हैं एडिबल। एडिबल मीन्स ईटेबल, ओके। So we eat plant, and what animal eat? Animal also eat plant, but why do we need to differentiate all things if that which person has eaten the plants and which person has eaten the food? Why do we differentiate it? Just for know the, because there are 3 categorization: herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous, as the name suggests, herbivorous, so means the person, the living thing which eats only plant is called the herbivorous. Okay, herbivorous means the living thing which eat only plant products are called herbivorous. Second, carnivorous, there are some animals which eat only animals, they are called the carnivorous. So the person who eats herbs, who eats animals, so the person who eats both plants and animals, they called omnivorous. So हर्बीवोरस हम किसे कहते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल काऊ, जैसा आप जानते होंगे काऊ ओनली ईट्स ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीनरी ही खाती हैं, वो ग्रास ही खाती हैं, सो काऊ इज़ अ हर्बीवोरस। एंड द एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स, जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को बस खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। ओके, एग्जाम्पल लॉयन, लॉयन ओनली ईट्स अनदर एनिमल, सो ओमनीवोरस, ओमनीवोरस इज अ एनिमल हु ईट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। एग्जाम्पल डॉग, डॉग को आपने देखा होगा, डॉग कैट और बाकी इंसेक्ट्स को भी, लिविंग एनिमल्स को भी खाता है, और साथ ही साथ डॉग्स क्या खाते हैं? साथ ही साथ हर्ब्स भी खाते हैं वो। सो दैट्स वाई डॉग इज़ अ ओमनीवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, देयर आर 3 categories based on eating habit. So let's conclude the chapter. We can conclude the chapter as there are varieties of fruit. Ingredients by which the particular material has made is called the ingredient. Sources of food means the ओरिजिनेशन ऑफ फूड, वो फूड जहाँ से आता है उसे कहते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, और जिनसे मिलकर वो फूड बना होता है उसे कहते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद हमने देखा फूड मटेरियल्स और सोर्सेज की, एनिमल्स के वाया भी फूड्स आते हैं और प्लांट्स के वाया भी आते हैं। थर्ड पार्ट में हमने ये देखा कि कार्निवोरस, herbivorous, omnivorous, based on the eating habit, 3 category of each and every humans or animals. Okay, thank you so much. Thus we have completed chapter 1 of class 6th. If you have any query, please give us on comment. Thank you.